हाय एवरीवन, वेलकम टू अर्पिता शर्मा क्लासेस। अर्पिता शर्मा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द एपिडेमिक्स डिजीज़ एक्ट। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी दिस वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। ये आपका एक्ट जो है ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से एंड जीएस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ऑल्सो रिमेंबर दैट द क्लास PDF विल बी अपलोडेड ऑन माई टेलीग्राम चैनल। क्लास का जो PDF हो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगा, सिंप्लीफाइंग यूपीएससी विद ईज। द लिंक इज ऑल्सो गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, so before we start the session, here's a small announcement for all of you. As you all know that Unacademy has launched 1 year and 2 year batches for UPSC CSE aspirants. Okay, and in these batches we are helping the students to complete their entire syllabus for UPSC CSE within the time limit, and we are helping them to cover their optional. We are providing them PDF study material. We are taking doubt clearing sessions also to solve their doubts individually. We are also giving them prelims test series. We are analyzing their question papers, their answer sheets, and we are giving them the feedback as well. So these batches are going to help you in completing your entire CSE syllabus within time, and we will also be helping you in revising your syllabus, complete syllabus. So the batches are in Hindi also, English also, and bilingual batches are also there. तो बैचेस आपके इंग्लिश में भी हैं, हिंदी में भी हैं, बाइलिंगुअल बैचेस भी हैं। अकॉर्डिंग टू योर लैंग्वेज प्रेफरेंस यू कैन सब्सक्राइब टू एनी बैच दैट यू प्रेफर, and you can get 10% discount also if you use this code Sharma20। अगर आप ये कोड Sharma20 यूज़ करते हैं तो आपको आपके सब्सक्रिप्शन पर 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। एंड ऑल्सो रिमेंबर दैट सब्सक्रिप्शन यू कैन ऑल्सो पे इन EMI फॉर्मेट। आप EMI फॉर्मेट में भी पे कर सकते हो। ठीक है, यू कैन यूज़ योर डेबिट कार्ड, यू कैन यूज़ योर क्रेडिट कार्ड, यू कैन यूज़ EMI भी आप यूज़ कर सकते हो देने के लिए। ठीक है, पेमेंट। लेट्स स्टार्ट। सो subscribe to Unacademy Plus today because from 28th of December the batches are starting, that is from today itself। आज से ही batches start हो रहे हैं। So in order to not miss these batches you can take your subscription। Okay, so let's start with the class शुरू करते हैं। So when we talk about the Epidemics Disease Act, number of people who are infected with novel coronavirus in India, it is going up। We all know that the number is increasing day by day। हर दिन ये number increase हो रहा है, right? And states and new strain of coronavirus has also been seen. So states have gone into battle mode to contain the spread of COVID-19. Schools have been shut down, then colleges have been shut down, many public events have been postponed, and even the IPL was postponed. So all these states and union territories have been directed to invoke provisions of Section 2 of Epidemic Disease Act 1897. When the lockdown was in force now, Epidemics Disease Act 1897 Section 2 was invoked by the Health Ministry. Epidemic Disease Act, it has total 4 sections। ये याद रखिएगा कि जो आपका एपिडेमिक डिजीज एक्ट है उसके टोटल 4 सेक्शंस होते हैं। एंड व्हाट इज द एम ऑफ दीज सेक्शंस? टू प्रोवाइड फॉर बेटर प्रिवेंशन ऑफ द स्प्रेड ऑफ डेंजरस एपिडेमिक डिजीज। खतरनाक तरीके की एपिडेमिक डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, स्प्रेड होने से रोकने के लिए इस तरीके के एक्ट को इन्वोक किया जाता है। सो फर्स्ट लेट इज अंडरस्टैंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस वर्ड कॉल्ड एपिडेमिक। एपिडेमिक की डेफिनेशन क्या होती है? नाउ एपिडेमिक मीन्स महामारी। इसका मतलब क्या होता है? महामारी। और इन इंग्लिश वी कैन से लार्ज नंबर ऑफ पीपल और एनिमल्स सफरिंग फ्रॉम द सेम डिजीज एट द सेम टाइम इज एपिडेमिक। एक ही समय पर, एक ही समय में एक ही रोग से बड़ी संख्या में पीड़ित मनुष्य और पशु, तो उस डिजीज को एपिडेमिक बोलते हैं। दैट डिजीज इज नोन एज एपिडेमिक। ओके, so to you can say stop the spread of this kind of epidemic disease, Epidemic Disease Act is passed, and it is routinely enforced across the country to deal with such outbreaks. For example, for cholera also this was passed, dengue also इसको पास किया गया था। The Epidemic Disease Act of 1897 is a law which was first enacted, underline this, to tackle the bubonic plague in Bombay in former British India. Now this is important for your prelims। ये आपका prelims के लिए important topic है। When was the first time that Epidemic Disease Act of 1897 was passed? So it was in British India. The law is meant for containment of epidemics by providing special powers that are required for the implementation, for containment, for stopping the disease, for controlling the spread of the disease. And the act has been routinely used to contain various diseases in India. Now let us understand the provisions of this act. इस act के provision को समझ लेते हैं।
So there are basically 4 sections, but the major sections are section number 2, section number 3 and section number 4. सेक्शन नंबर 2, अब ये सेक्शन किसकी बात करता है? इट एम्पावर्स द स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज टू टेक स्पेशल मेजर्स एंड टू फॉर्मुलेट रेगुलेशंस टू कंटेन एनी आउटब्रेक. कंटेन मीन्स टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ द आउटब्रेक. तो स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज आर empowered under section number 2 of Epidemic Disease Act 1897 to take such precautions, such measures, such steps and to form such rules and regulations with which you can stop the outbreak. The section says when at any time the state government is satisfied that state or any other part thereof is visited by or threatened with an outbreak of any dangerous epidemic disease, state government, if it thinks that the ordinary provisions of the law for the time being in force are insufficient for the purpose, may take or require or empower any person to take such measures by public notice, prescribe such temporary regulations to be observed by public in order to stop the spread of the disease. Okay, using the provisions of Epidemic Disease Act 1897. Okay, now section number 3. Section number 3 says any person disobeying any regulation or order made under this act shall be deemed to have committed an offence punishable under section 188 of Indian Penal Code. इंडियन पीनल कोड जो है आईपीसी की धारा 188 के तहत कोई भी इंसान जो कि इस एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहा है, तोड़ रहा है, तो उसको पनिश किया जाएगा. सिमिलरली इन लॉकडाउन ऑल्सो इट वॉज सेड दैट इफ यू आर ट्राइंग टू वायोलेट द लॉकडाउन यू विल बी पनिश्ड, राइट. Section number 4, protection of persons acting under the act. No suit or other legal proceeding shall lie against any person for anything done or in good faith intended to be done under this act. For example, the police officers, the hospital staff, the shopkeepers, they were under the legal protection to implement this act. ठीक है, to implement the orders of the government under this act. Point clear? Now let us understand what is this section 188 of IPC. Section 188 क्या होता है IPC का? Whoever knowing that by an order promulgated by public servant lawfully empowered to promulgate such orders disobeys the direction, ठीक है, सच डिसओबीडियंस विल बी पनिश्ड. इस डिसओबीडियंस को पनिश किया जाएगा विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 month ऑल्सो एंड द फीस विल बी, द फाइन विल बी 200 रुपीज़ और बोथ. आपको जेल की सज़ा भी होगी 1 महीने की और 200 रुपये भी पे करना पड़ेगा अगर आप किसी भी पब्लिक सर्वेंट के लॉफुल ऑर्डर को डिसोबे करते हो इस एक्ट के तहत. एंड इफ सच डिसओबीडियंस कॉजेज और ट्रेंड्स टू कॉज danger to human life, then you will be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months also or fine of 1000 rupees or both. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को? So this is the section 188. This is again important for your prelims. ये भी आपके prelims के लिए काफ़ी important है. Now let us understand what is the criticism given to Epidemic Disease Act. Historians have criticized the act for potential for abuse. Now in this act in 1897 also it was abused a lot by the British government. Using the powers conferred by the act, the colonies Using the powers given under the act, the colonies authorities would search suspected plague cases in homes and among passengers with forcible segregations, evacuations and demolitions of infected places. During the time of the plague in Bombay, when this act was used 1897, the British government misused this particular act. Why? By forcefully evacuating people, by demolishing their houses, by terming their houses as infected places and demolishing it, by separating people from each other. And in 1897 the law was enforced, right? In that year only the freedom fighter Bal Gangadhar Tilak was also punished with 18 months of rigorous imprisonment. It was published also, it was criticized also by the other nationalist leaders. Okay, point clear हो रहा है सभी को? क्यों इनको अरेस्ट किया गया था? वाई ही वॉज अरेस्टेड? बिकॉज इन न्यूज पेपर्स लाइक केसरी एंड महारत्ता ही वॉज क्रिटिसाइजिंग द इंपीरियल अथॉरिटीज फॉर देयर मिस यूज ऑफ एपिडेमिक डिजीज एक्ट एंड मिस हैंडलिंग ऑफ द प्लाग एपिडेमिक. दैट इज वाई ही वॉज इम्प्रिजन्ड फॉर 18 months. So what can be the other examples of epidemic disease act? First of all, in 2018, District Collector of Gujarat, Vadodara, he issued a notification under this act declaring Khed Karmsiya village in Vagodia as cholera affected. ठीक है. Then in 2015 also to deal with the malaria and dengue situation in Chandigarh, this act was invoked. Okay, and then in 2009 also to tackle the swine flu outbreak in Pune, section 2
powers were used to open screening centers in civic hospitals across the city, and swine flu was declared a notifiable disease back then in 2009. So these are the latest examples of using the Epidemic Disease Act. So this was all for today. I hope you enjoyed today's session. Also, do not forget to subscribe to Unacademy Plus. The batches are starting from today. I am taking history batches. मैं history batches ले रही हूँ. अगर आपको अपनी तैयारी को और ज़्यादा strong और एक सही mentor के अंडर अपनी तैयारी को आगे लेकर जाना है, तो इस 1 year बैच को या इस 2nd year बैच को 2 year बैच को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा. Use this code Sharma20 to get 10% discount on your subscription also. Link is given below in the description box.